All right, a very good evening to all of you. Am I clearly audible and visible to you all? A very good evening. Very good evening, Bhumika. I'm a little sorry for the lighting. It's raining like cats and dogs in Delhi. And like Gurgaon has got a statutory warning from the disaster management that it is going to be waterlogged. So we have a little electricity crisis here. Thankfully, we are managing to get the class running. You know, the God is with me since morning. मेरे लैपटॉप नहीं चल रहा था तो चल गया फिर लाइट नहीं चली थी फिर चल गई इट्स लाइक यू गाइस आर लकी गाइस फॉर मी good evening. So every black sky has a silver lightning. So that's a perfect example. So if you look at the bright side, you can actually see the lightning. But if you keep stuck on the black screen, you will only see the black screen. So please move on. Be happy. Look at the light. There is light behind every black screen. Yes? So starting on a positive note, आज मैंने एक वीडियो भी शेयर किया अनुपम खेर का रैपिड रिवीजन पे. So if something is going bad, there is definitely something good which is planned for you. So believe in it, and you will find the reason when you join the dots later in life. So believe that something good can also happen, and when you will believe it, it will definitely happen. You guys are going to top the NEET next year. At least believe it. Something good will happen. है ना? हम कहते हैं ना कि यार ना अब की बार हम 10,000 से ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे दिवाली पे. तो 10 तो नहीं 15 तक रुक तो जाते हो ना. ऐसे तो नहीं 50,000 खर्च कर देते हो. तो यू विल एटलीस्ट लिमिट योरसेल्फ समवेयर. टॉप का सोचोगे तो कहीं तो पास आ जाओगे. तो इट्स ओके ना. very good evening. I hope I'm able to transmit the vibe I'm currently in since morning, since the time I've cracked my laptop crisis. Like, dude, if you really want to do something and you really want to do it, it happens. So I really wanted to take my class and it happened. Though it happened 30 minutes late, but it happened. So if you really want to click your NEET, crack it, you'll make it happen if you really want to do it. So the number of reallys is what I can't count, but it should really come from here. Very good evening, Riddhi. So ना सुबह से मेरी ये जो ईयर टू ईयर स्माइल है वो जा ही नहीं रही है. I can't thank God enough. All right, let's have a bigger number. Very good evening, True Dream. Hi, Rahul. Good. Okay, let me share the screen with you. One sec. So these are my number of people. Let's get the music going. कितना ठीक है ना? And let's take a position where everybody can see the score, the topper, everything. कुछ छोटी सी हो गई, थोड़ी सी तो बड़ी हो जाती. No, it's okay. So these are the ones which have already joined us. Let's do it full screen. Shall we start? So it's 7:03. I said that we'll start at 7. FYI, Habi gave a very good exam. He's going to pass. Chale. Let's get started. 1, 2, 3, go. So we're going to practice questions on cell cycle. Let's do it. So at the end of meiosis 2, what is the number of haploid cells that are formed? Easy one to begin with. Let's see.
कौन है 2 वाले और 8 वाले? At the end of meiosis, we always get how many daughter cells? We get 4. Okay? Chile. No worries. Next. Rahul, Kahoot is a gaming quiz. Hi, Neat, I'm good. When do you clearly see the tetravalent? Very good. Packy team. देखो डाई आपका जो phase है meiosis 1, prophase 1, it's divided into leptotene, zygote, pachytene, diplotin, dikinesis. Zygote में बन जाते हैं 4 है ना, बट उतने क्लियरली नहीं दिखते. ज्यादा क्लियरली किसमें दिखते हैं? पैकीटीन में. वेरी गुड. वाह, स्ट्रीकी स्ट्रीक थी. Longest phase of meiosis is. That's perfectly okay, Munaza. Just 2 questions. You can still hit it. तो बड़ा easy वाला था वैसे. I've kept it doing good. Hi, Ujjwal. Prophase 1. बेटा प्रोफेज 1 सबसे बड़ा होता है, उसमें 5 सब फेजेस होते हैं. उन्नति, I always see you in the scoreboard. I'm so happy. Crossing over occurs during which phase? चलो 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 जल्दी 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 आंसर करो. अगर इसको किसी ने गलत किया ना, बाय गॉड की कसम, मैंने तुम्हारी पिटाइयां लगा देनी है. 13 बच्चे zygote. Really? Crossing over occurs during pachytene. मतलब no ways you can go wrong in it. Shanvi, how could you go wrong in this? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. Which shows the importance of synapses and formation of chiasmata. Importance क्या है synapses और chiasmata की? क्या कहानी, क्या खिचड़ी पकती है ये chiasmata और synapses के पीछे? बस यही. अगर किसी एक को चुनना हो, देखो, then increase in the progeny, the DNA on homologous chromosomes mix, but you have to tell ना homologous chromosomes में किसमें? Non-sister chromatids में. Mention तो नहीं था ना. So you should have chosen the most appropriate one. The reciprocal exchange of chromosomal sections occur. Next, which is correct for meiotic metaphase 1? पहले तो बताओ, मेटाफेज 1 में हमारे पास यूनिवैलेंस होते हैं, बाइवैलेंस होते हैं, टेट्रावैलेंस होते हैं. फिर उस बेसिस पे आप बोलना होमोलोगस होते हैं, नॉन होमोलोगस होते हैं. वेरी गुड, बाइवैलेंस होते हैं. चलो एसपी साहब टॉप पे आ गए. This time the question is a little tricky one. Crossing over occurs at which stage? So मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है. बात वही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, पैकीटीन में हो रही है. पैकीटीन में कितना क्या दिखता है? बाइवैलेंट, यूनिवैलेंट, टेट्रावैलेंट. A little more deep into it. The fourth stand stage, the tetravalent stage. कितना ऊपर नीचे हो रहा है यार आज स्कोरबोर्ड. वाओ. Crossing over is also an enzyme mediated process, and the enzyme involved is called very easy.
अब की बार नीट में क्वेश्चन भी आया था कि एक डैश नोड्यूल बनता है, वो जो नोड्यूल बनता है वही वाला एंजाइम है जिसके ऊपर क्रॉसिंग ओवर होती है। वेरी गुड, द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल और रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है। वंडरफुल, थोड़ा सा ही बदला। Synapses occur in dash phase of meiosis. अब प्लीज मेक श्योर क्रॉसिंग ओवर नहीं पूछा है, साइनैप्सिस पूछा है, तो आंसर अकॉर्डिंगली। मैंने तुम्हें हिंट दे दिया हुआ है। वेरी गुड बेटा, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, जाइगोटीन में साइनैप्सिस होता है। द जॉइनिंग, द पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। Oh, Ritika, congratulations, you're in the scoreboard. One, meiosis कब होता है प्लांट में, प्लांट की लाइफ साइकिल में? Haplontic, diplontic, haplodiplontic. When it changes from which phase to which phase? When it changes from a sporophyte to a gametophyte, diploid to haploid. जिनको पता है कि sporophyte diploid होता है, gametophyte haploid होता है, तो diploid से haploid reductional division होती है, meiotic division होती है. All right. Significance of meiosis lies in. अब जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा कोई एक पर्टिकुलर थंब रूल फॉलो नहीं करता है, ना ही ऐसा है कि हमेशा ऑल ऑफ दिस आंसर नहीं होगा, और ना ही ऐसा है कि हमेशा ऑल ऑफ दिस आंसर हो भी तो सकता है। वेरी गुड, सब कुछ करेगा वो, इट्स गोना डू एवरीथिंग। वेरिएबिलिटी भी लाएगा, क्रोमोसोम नंबर भी मेंटेन करेगा, रिडक्शनल डिवीजन भी है। एसपी ये है कौन, जरा प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कितनी बार से यू आर कमिंग इन द Kahoot क्विज and you are getting into the scoreboard, but I don't get to know you. Please DM me. So when I say number of DNA strands, please understand why are we asking about the number of DNA strands. It's 4. तुमको याद है कि हमारे पास जीवन में क्या होता है, सिंगल क्रोमैटिड, एंड सिंगल क्रोमैटिड इज मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए के कितने स्ट्रैंड्स? 2। और जैसे ही जीवन से एस फेज में जाता है, देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ दैट क्रोमैटिड, वन मोर क्रोमैटिड इज फॉर्म्ड, and now that chromatid will have how many DNA? 1 with how many strands? 2. DNA is a double stranded structure, तो एक क्रोमैटिड का 2 डीएनए, दूसरे क्रोमैटिड का दूसरा डीएनए, तो टोटल कितने डीएनए हो गए? 4 डीएनए स्ट्रैंड्स हो गए ना, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम of one, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम another chromatid, because G1 से S में डुप्लीकेशन हो गई, तो G2 में 2 क्रोमैटिड है ना। अब बुद्धू, very good Shubho, I'm so proud of you. It's you. I got it. अच्छा, अब और बड़ी मजेदार चीज है, इन 4 ऑप्शन में से ना 3 चीजें एस फेज में होती हैं, पर आपको किसी एक को चुनना है, तो बताओ मोस्ट एप्रोप्रिएट आप किसको चुनोगे? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए को। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए भी होती है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम भी होता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल भी होता है, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. That's perfectly okay. Still, you're on the top, Shuvo. It's not you. Unnati is taking it up anyways. Hi, Sarthak. Interphase nucleus is enclosed by.
इंटरफेज में जो न्यूक्लियस होता है, इंटरफेज माने रेस्टिंग फेज, वो कैसा होता है? इट्स डबल मेम्ब्रेन एंड इट हैज पोर्स. एक नॉर्मल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, नॉन पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती बेटा, और सिंगल यूनिट भी नहीं होती है ना. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स ड्यूरिंग माइटोटिक फेज, एम फेज. उन्नति. चले. Which of the following statement is true for cells in G0 stage of cell cycle? G0 stage, the quiescent stage. अच्छा, एक क्वेश्चन था डीपीपी में क्विसेंट स्टेज वाला, जो पुराने प्रीवियस ईयर से लिया गया था. तो उसके अंदर क्योंकि एनटीए ने आंसर दिया था एग्जिट द सेल साइकिल, बट आइडियल आंसर शुड बी सस्पेंड, सो आई एम गोइंग टू करेक्ट इट. डोंट वरी अबाउट इट. Very good. Cells are metabolically active, but they are no longer proliferating, means that they are no longer going to divide. They are going to perform a specific function. They are going to become differentiated. Very good. Okay. Shan Sharma, welcome to board. रिद्धि, क्वेश्चन को करने की स्पीड कैसे बढ़ाए? Be more sure of the concept. The more sure you will be, the more fast you will be. And you'll become more sure by practicing it more number of times. So practice one set of questions more number of times. But एक gap के बाद. Very good. कि एक जीवन फेज में अगर एक पेरेंट सेल डिवाइड करना शुरू कर रहा है या एक जीवन फेज में, तो उसकी क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी डीएनए कंटेंट में कोई चेंज नहीं आएगा. डीएनए कंटेंट में चेंज आता है आफ्टर एस फेज. जीवन के बाद एस फेज के बाद G2 में चेंज आएगा. ठीक है. कांस्टेंट बोर्ड. Ritika, congratulations, you are at number 2. A diploid living organism develops from zygote by which type of the following repeated cell division? बताओ जी. अगर एक जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो फीटस बनाता है, तो हम कौन सी डिविजन करते हैं? माइटोसिस करते हैं, एमाइटोसिस करते हैं, मियोसिस करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं. बेटा मियोसिस, जाइगोट शोज मियोसिस ओनली इन हैप्लॉन्टिक इंडिविजुअल्स, और यहाँ पे स्पेशली लिखा है डिप्लॉयड. तो डिप्लॉयड जाइगोट विल नॉट शो मियोसिस बेबी. Mitosis. Ritika, I'm amazed. Top of the scoreboard. Very good. Spindles are formed of. मुनाजा, मिस रीडिंग ही तो नहीं करनी है, क्वेश्चन को पूरा रीड करना है, स्टेटमेंट को भी और ऑप्शंस को भी. Very good. They're made up of microtubules. That's perfectly okay, Shivu. See what happens is, ये मैंने बहुत नोटिस किया है, ऐसा नहीं है कि बच्चों को आता नहीं है या उनके कॉन्सेप्ट नहीं है या उन्होंने पढ़ा नहीं है, उनको सब आता है, उनके सब कॉन्सेप्ट है. Where you go wrong is in understanding the question, in understanding the language of the question, what the question is trying to ask. शायद आप इतनी एंजाइटी में होते हो कि आप सही क्वेश्चन पढ़ते हुए भी गलत पढ़ लेते हो या समझ लेते हो. So you have to really learn to keep your calm at the time of writing an exam, कि जो तुम पढ़ रहे हो वही समझ रहे हो. तुम पढ़ते कुछ हो, समझते कुछ हो, ये नहीं करना है. तो आता तुमको सब कुछ है और फिर भी तुम पेपर में गलत कराते हो, just because you're not able to control your anxiety. So try to work on it from the very beginning. You don't lose your calm, you don't lose your composure while you're answering, and you understand what you actually need to understand, and you don't waver from your thought process. चले, पाठक जी आ गए हमारी स्कोरबोर्ड लिस्ट में. Mitosis is characterized by reductional division, equational division, both reductional and equational division, absence of spindle formation.
I like the music. Huh? Mitosis is equational division. Absence of spindle happens in amitosis. Okay. Ritika is holding on to her position. I'm so proud of you, darling. Which of the following character is related with telophase? What happens during telophase? Batao, 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 batao. Beta, formation of two daughter nuclei. Formation of nuclear membrane नहीं होता, reappearance of nuclear membrane होता है. So if you have to choose from formation of two daughter nuclei or reappearance of nuclear membrane, you will choose two daughter nuclei क्योंकि पहले वो बनते हैं, फिर उनके पास nuclear membrane आता है ना. या अल्टीमेट रिजल्ट क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने का कि डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं. नो, इट वुड बी बी डी, सॉरी, मोर सिग्निफिकेंट. और लास्ट ही क्लास में पढ़ाया अभी कि टीलोफेज में क्या बोलोगे, क्या बनता है, डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं. ठीक है, किसमें, माइटोसिस में. और हम बोलते हैं कि डॉटर सेल कब बनते हैं, आफ्टर साइटोकाइनेसिस. दैट्स ओके. अब याद रखना कि किसको मोस्ट एप्रोप्रिएट चुनना है. When are the chromosomes most condensed? Easy one. It's metaphase. देखो मैं तुम्हें एक थंब रूल बताती हूँ कि जब सबसे पहली ही ऑप्शन लगे ना सही, तो प्लीज बाकी के 3-4 ऑप्शन जरूर देखना क्योंकि कई बार फोर्थ ऑप्शन ज्यादा सही होती है. ठीक है, so whenever first option is the right answer, think twice before marking it. Always look at the other 4 options also. Always look at all the 4 options before marking an answer. No matter if you know the answer is 1. You never know which one is more better. So at least look at all the 4 options before marking it. What is the correct sequence of 2 main events in mitosis? 2 main event होते हैं mitosis में. माइटोटिक फेज में, एम फेज में, जिसको हम बोलते हैं कि न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. तो पहले कौन सी होती है, बाद में कौन सी होती है? वेरी गुड. कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. बेटा साइटोकाइनेसिस पहले नहीं होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है. ठीक है, चले जी नेक्स्ट. कुछ भी तुक्का मत मारो प्लीज, अच्छे से करो उसको. वर्षा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. You've been so consistent and you've been so, into it कि अब की बार मुझे करना ही है. Way to go, very good girl. यही एटीट्यूड होना चाहिए वर्षा वाला, रितिका वाला, कि नहीं अब तो करना ही है, चाहे कुछ हो जाए. रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल, इसी के जैसा एक क्वेश्चन पहले भी पूछा था कि एस फेज में क्या क्या डुप्लीकेट करता है. जब मैंने बोला था कि करता है सेंट्रियोल भी, करता है डीएनए भी, क्रोमोसोम भी. बट आपको अगर एक चुनना हो तो आप क्या चुनोगे, डीएनए. बट इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता नहीं, उसमें करता है. सेंट्रियोल डुप्लीकेशन occurs in interphase. Its movement towards poles occurs in prophase. चलो जी. During mitosis, number of chromosome gets changed, not changed, maybe changed if it is mature, maybe changed if it is immature. Tell me about it. No change. It's equational division. The chromosome number remains same in mitosis. I was expecting no change in this chromosome.
Complete disintegration of the nuclear envelope marks the beginning of which phase? Or end of some phase? मेटाफेज की बिगिनिंग स्पेशली बोला था, एनसीईआरटी लाइन है ये, कि अगर जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा गायब हो गया, मतलब कौन सा फेज स्टार्ट हो गया? मेटाफेज स्टार्ट हो गया, बिकॉज प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है. क्या बात है. स्टैटिक बोर्ड वंस अगेन. अच्छा, I've done some changes in this question. I can give you a hint. When do you see chiasma? When is chiasma most prominently viewed? Or chiasmata or an X-shaped structure is formed in which stage? Very good, diplotine. You know, had it been इसमें क्रॉसिंग ओवर लिखा होता तो मैं शायद पैकीटीन को ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर मानती, बिकॉज ये क्रॉसिंग ओवर शो कर रहा है. बट यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं लिखा, तो हम इसको डिप्लोटीन को ही मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मानेंगे. मैंने पहले भी ये चीज समझाई है कि एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से आंसर बदल जाता है. अगर इसमें पैकीटीन के ब्रैकेट में क्रॉसिंग ओवर लिखा होता तो पैकीटीन वुड हैव बीन अ मोर बेटर आंसर, बिकॉज इट इज टेलिंग दैट इट इज शोइंग क्रॉसिंग ओवर एंड इट इज शोइंग क्रॉसिंग ओवर. बट क्रॉसओवर के बाद वाला इमेज तो नहीं है, सिर्फ कियाज्मा लिखा है. एंड कियाज्माटा इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हिच फेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ meiosis 1? Diplotene. So it is going to be the correct answer. Very good, Varsha Ritika. क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन. ऐसा ही क्वेश्चन आया भी था अभी, और हमने क्या मार्क करना है? लिंक्ड, नॉट लिंक्ड, सिस्टर, नॉन सिस्टर, होमोलोगस, नॉन होमोलोगस. व्हाट शैल बी योर आंसर? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. क्या बात है. कोई ऐसे भी ऑप्शन है जिनको किसी ने मार्क नहीं किया? आई एम सो हैप्पी. चले. Which of the following stage is responsible for the appearance of lamb brush chromosomes? याद है तुमको? polytene chromosome, lamb brush chromosomes are dash chromosomes. They are formed in dash phase of cell division. They are the meiotic prophase diplotene chromosome. Why did you mention mitotic anaphase or mitotic? They are meiotic. Very good, Unnati. Welcome back. Cleavage is a unique form of mitotic cell division in which? Very good, Ujjwal. बेटा वो ब्रश जैसा दिखने लग जाते हैं, उनकी फोल्डिंग इस तरीके से होती है that they start appearing like a brush. See, you have to understand about cleavage. One thing, cleavage is a special type of mitosis. A special type of mitosis where there is nuclear division, but there is no cytoplasmic division. ठीक है? The cytoplasmic content remains the same. ठीक है? But the nuclear content changes. So अगर ये लिखा हो कि कोई ग्रोथ नहीं है तो न्यूक्लियर ग्रोथ है. ठीक है? न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तो पहले दो ऑप्शंस तो बिल्कुल ही गलत हो गए. और न्यूक्लियस डिवाइड करता है बट साइटोप्लाज्म रिमेन्स द सेम. एंड ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होती. द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिमेन्स द सेम. तो बाकी तीनों ऑप्शंस को आप नलिफाई करके एक्सक्लूजन मेथड से आंसर ढूंढोगे. समझ में आया? The cytoplasm content remains the same. Only the nuclear content is the one which changes.
and you have division of cells into 2 equal halves में. Now what is phragmoplast? Phragmoplast, which is formed during cytokinesis of plant cells. Now you tell me, it is a precursor of? It is a precursor of cell plate, which is formed by vesicles. Vesicles from ER and Golgi. Golgi, which are single unit Golgi in plants called dictyosomes. बेटा मिडल लैमेला तो सेल प्लेट बनती है बाद में, बट फ्रैग्मोप्लास्ट है क्या? इट्स अ वेसिकल. All right. Last 10 questions. Spindle fiber is made up of. हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया है सिमिलर टाइप का, बट वहां पे प्रोटीन फाइबर्स की बात हो रही थी. अभी यहाँ पे एक्चुअली में केमिस्ट्री ऑफ द प्रोटीन की बात हो रही है. Which protein? Because it is made up of microtubules. Tubules are made up of tubulin. गुड. वर्षा, उन्नति, रितिका, ऐसे सबके बीच में चल रहा है. Congression is a phenomena. मैंने स्पेशली बताया था कि congression एक फेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, and congression is like an arrangement. I'm not going to talk about it anymore, otherwise you'll get the answer. It's the arrangement of the chromosomes at the equator. एक इक्वेटोरियल प्लेट में सारे सेंट्रोमियर्स एक कॉमन लोकस पर. Static board. Which type of cell division helps in regeneration of cell? Repair, regeneration and growth is brought about by which type of cell division? Easy question. A similar question has come, but in a different way. So इस तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो कि एक तरीके के क्वेश्चंस हैं, उनको अलग अलग तरीके से कान को इधर से पकड़ो so that you can remember it. It's mitosis, equational division. Repair, regeneration, growth is done by mitosis. Repair of old worn out cells is done by mitosis. अगर क्रोमोसोम्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो पहले तो समझ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस फेज में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और फिर क्योंकि मियोसिस मेंशन किया है तो आपको मालूम होना चाहिए. गैमीट फॉर्मेशन मेंशन किया है. गैमीट फॉर्मेशन इज रिडक्शनल डिवीजन. मियोसिस because of unequal distribution of chromosomes during anaphase. देखो distribution means separation. Separation occurs in anaphase. तो ना आप प्रोफेज बोलोगे ना मेटाफेज, तो आंसर या तो बी होता या सी होता. नाउ डिसजंक्शन अगर हो रही है माने वो सेपरेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे. नॉन डिसजंक्शन होता तो शायद मैं बी को आंसर मांगती, बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज 2 विल बी द करेक्ट आंसर. Oh, Nadi, you lost your place. Bivalents in meiosis are. अब बताओ. It's an easy one. Just that you have to look at all the 4 options before answering. Very good. They're pair of homologous chromosomes. Non-sister chromatids नहीं यार. Sister भी तो होते हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो सिस्टर नॉन सिस्टर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स. वो जब पेयर्ड होते हैं तो वो बाइवेलेंट बनाते हैं. Static board. Moving to the last 5 questions. After telophase 1 of meiosis, the chromosomal makeup of each daughter cell is. If you know what happens in telophase 1, what separates in anaphase 1, you will be able to get the answer. I'm so enjoying this question. Let's see how many of you get it correct. Because first meiosis is reductional division, so it is going to be a haploid.
but the chromosome has duplicated chromatids. The chromatids don't separate, which we have to do in meiosis too. बेटा डिप्लॉयड नहीं होता, वो हैप्लॉयड होता है. थोड़ा सा टाइम ले लिया आप लोगों ने अलग अलग. हाँ, बट द स्कोरबोर्ड में नंबर ऑफ पीपल एंड द नेम्स ऑफ पीपल रिमेन द सेम. जो एम फेज में एंटर कर रहा है, will it be always haploid, will it be always diploid, or it can be either haploid, diploid? It will either be haploid or diploid, but always with duplicated chromosomes, because there is always going to be S phase. All right, next. Haha. Oh God, it's been a long day. Anaphase 1 of meiosis is characterized by. देखो similar question है, concept same ही है, but then you have to keep repeating it so that it gets fixed in your head. Very good. There is no separation of chromatids. There is no splitting of centromeres. There is separation of homologous chromosomes. Each chromosome with 2 chromatids. Static scoreboard. Second last question. You have to mark the incorrect statement. Now this concept is also based on cleavage. That cleavage is a type of mitotic division, and where cleavage is responsible for increasing the nucleocytoplasmic ratio to bring it to a balance of 1:1. जब हम cleavage करते हैं तो एक बड़ा सा zygote जिसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म है और कम सा न्यूक्लियस है, हमारी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इज लेस देन 1, उसको टुवर्ड्स 1 बैलेंस की तरफ लेकर आता है, इंक्रीज करता है बाय माइटोसिस, क्लीवेज. Static board. Okay, let's see who does the last question correct. And मैंने ऐसे बहुत बार कराया भी है क्वेश्चन और पता भी होना चाहिए. So let's see. I can give you a hint. It is asking about seed. And when it's asking about seed, seed is a product of sexual reproduction. It is formed by fusion or male and female gamete. है ना? और fusion of male and female gamete के लिए you need to form. सिर्फ 7 बच्चों ने सही किया है. बेटा fusion of male and female gamete के लिए you need to form female gamete and you need to form male gamete. How many divisions to form female gamete? From one meiotic division, you get only one female gamete. That means to form female gametes, you need 500 divisions. तो एक फीमेल गैमीट बनाने के लिए एक डिवीजन, 500 फीमेल गैमीट बनाने के लिए 500 डिविजन्स, और 500 मेल भी तो बनाने होंगे क्योंकि सीड बनाना है. सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल फीमेल दोनों बनते हैं. एंड हाउ मेनी मेल गैमीट्स डू यू गेट बाय वन meiotic division? 4. So how many meiotic divisions do you need to produce 500 male gametes? 125. You divide 500 by 4, you get 125. So now when I get both the male and the female gametes, now I am capable of forming a zygote, an embryo and a seed. So how many total? 500 for female, 125 for male, total 625. Only 7. Let's see who won. Ritika, third. Well done. SP second. I want to know who came first. Shh, came first. Still very good, Varsha. Very good, Unnati. Good job. You are very consistent, and believe me, the consistency is what pays off. है ना? It doesn't matter whether you are on the top or the not. What matters is that you are consistent. You know, if you have seen the interview of Pizza, please go watch it. Pizza used to be never on the top of the
scoreboard, but she was so consistent being in the scoreboard. She scored more than what she expected this time, and it was a sixth drop, seventh attempt, and she made it this time. So you just have to be consistent. I really don't know who but I want to know, but who Please connect with me on Telegram. I really want to know who you are. And if I really want to know, I'll get to know you. Believe me. I'll find out who you are. Very good, Renu. Congratulations. वर्षा तुमने बहुत अच्छा किया. Ujjwal, please share the screenshot with me on Telegram. I'll explain it there because I can't go back with the quiz right now. Huh? Anybody and everybody is welcome to connect with me on Telegram. So you may. Thank you so much for attending the quiz. We'll be coming back with more quizzes for you. Till then, goodbye. Have a great evening. Tomorrow, you guys are writing your test from 9 a.m. in the morning to the 9 a.m. in the evening for cell and cell cycle. So, all the best. Do well. Rock it up. Bye.